Very good evening, friends. Today we have the privilege of having with us CS Harish Tareja ji, who is not only an established company secretary but a practicing insolvency professional as well. We have had the opportunity of listening to him on earlier occasions as well, and we really feel enlightened by the depth of his deliberations and his technical and practical inputs on the subject. The topic for today's deliberation is technical, commercial, and ethical issues which an insolvency professional faces while handling various assignments. These technical, commercial, and ethical considerations help him not only in performing his duties well, but can indemnify him in case of any professional misconduct which might come upon him in case there are any aberrations. So, these inputs will definitely guide him to perform his functions in a better way. With this, over to CS Harit Tarejaji, please. Thank you, Gupta ji. Thank you very much. So good evening, everyone. The topic which has been assigned to me today, that is regarding technical, commercial, and ethical issues when we perform our duties as insolvency professional. So the first thing which comes into our mind, let us just go one by one with regard to one technical issue, then we'll deal with commercial issues, and thereafter ethical issues. So the technical issue, generally when the CIRP gets admitted, the first thing which comes into our mind, the company which I'm going to taking over, what kind of company it is. So I'm just taking an example. It will not be more of legal side. It will be more of when we have just crossed that barrier of passing an exam, and then we have been appointed as interim resolution professional initially, and thereafter when we'll be confirmed as a resolution professional. So the kind of challenges we will be facing when we have been appointed as insolvency professional initially, interim resolution professional initially, and thereafter when we'll be dealing as a resolution professional. Simple. Please continue, sir. Please continue. सबसे बड़ा challenge when it comes to, there are two situations when we become an interim resolution professional. First scenario is when the company is not working as a going concern. Second issue is when the company is working as a going concern. When the company is already in dead stage, there is no location of promoters, even the balance sheet is not available on MCA portal. The details are not available, because this kind of scenario generally takes place when the application is being filed by the operational creditor. And even the assets are also not available. In that scenario, when we are just making the public announcement, doing all these expenses, the first thing what generally now tribunals have started doing is just asking the operational creditor to submit a rupees of 2 lakh rupees for the first month, and thereafter the COC will be constituted and all the respective expenses will be taken care of by the COC. This is how the mechanism which is being taken care of with respect to the interim resolution professional. But when it comes to technicals, and if the company as a going concern, when it is not as a going concern, it is already in dead stage, the most of the duties which are to be performed by interim resolution professional is with respect to the CIRP process, where he'll be making the public announcement. After that, he'll be just collating the claims, will be constituting COC. Then he'll be running CIRP rather than running a corporate debtor. So it is, when we are talking about running a CIRP, he will be doing all the compliances with respect to the code, which is mentioned in the rules and regulations with respect to that particular CIRP. Then it comes to the aspect of if it is a going concern, the details which are required to understand the business. I'm just taking an example because I'm dealing one of the company which is into EPC. So
I'll just take that example for the purpose of understanding. And there are other companies also, because this being a very, very technical side, where the business understanding with respect to that particular project, and there are thermal projects, there are power projects, there are civil construction, this kind of company where all span of construction activities which are there, and project which they take up is power plants are, thermal plants are there, road constructions are there, pipelines are there, contractor for real estate. So this company which actually we are taking care of has a lot of technicals involved into it. So I'm sharing that for the purpose of understanding, because we being from total legal side and the finance side, when these kind of technical comes in, how to handle that particular situation, I'll be just taking you through that story, how I handled that particular scenario. So we will be able to understand how these technicals are very important. So the day I entered into the company, I met the few employees, because on those, at that point of time, directors were not there in the company. They have gone somewhere outside. So initially, just I what I did is I called all the employees and called in the conference room and just conducted one meeting and told them about the process, and just to get the feel of what the company is doing as of now. And when we just deal with all these kind of situations, the one thing is very clear: all the employees and the entire environment of the company is into negative state. This we need to understand very, very clearly, that the state of mind of all those who are connected to that particular corporate data will be in the negative state. No one will be talking about anything positive about that corporate data. And all the employees, either they might not be getting salary from last 2 months, 3 months, or 5 or 6 months, or and the kind of scenario is, even no one is interested to work also. So this is the kind of scenario when we enter into a company. And thereafter, what happened next, I just called them, attended, just conducted one meeting of all those employees, those who were present at that point of time, and told, this is the scenario as of now. Now the company has been shifted, the control has been shifted from the promoters or the directors to the court administration, and each and everything will be monitored, and all that, whatever the things which are required for the purpose of administration, and the banks and everything, now you all will be reporting to me. So, and the one thing we need to understand very clearly, we are not the owners of the company. Because if we start feeling that we are the owners of the company, we will start behaving like that. But ultimately, we need to understand we are custodian of that particular organization, and we are part of the process. If we will think of that we are owner of the company, we may behave like that, I'll throw you out, I'll just treat you, all that kind of things may start coming in automatically. That is a part of behavior when I think that this is in my control, because the control has been given along with a great responsibility. Because the purpose of control is to perform. It is not to take that ownership and just run like a, you know the way earlier it used to be lala type company. It is a custodian kind of business, where we need to manage, control, and motivate the demotivated staff who is already not getting salary from last 3 4 months. So this is the initial challenge when we enter into a company which is a going concern, and each one is frustrated. At that point of time, I told, just to make them, I just took them through the process. And thereafter, the first thing I told, I need just 1 or 2 months of yours, because you have already spent 4 to 5 months. But I'll make sure, yes, from now onwards, when I'm there, you have given, say, 10 years, 5 years, 8 years, whatever the time of period you have already given to the company. I'm asking just 2 months, just to understand the feel of the corporate data, and I'll make sure that each one of you will get your salary.
And how it will be done, you just leave it to me, just cooperate with me for 1 or 2 months, and thereafter I'll make sure that before taking my fee, I'll make sure that your salary is paid. This kind of assurance I gave them at that point of time. Ultimately, I'll be the last one. When your salary is paid, then I'll be taking out the money. Otherwise, I'll not take out the money for my personal usage. So this is how I convinced them. And little bit of still the kind of motivation when they are already into bottomless motivation and already suffering a lot. Then I told, okay, so what I can do is you just give me a feeler of business, because this they told me that already there are 3 4 sites which are running, and already 6 sites where these are in abandoned conditions. There are 2 3 bank guarantees which are on the verge of invocation. There are 2 bank guarantees which will be just extension period is to be going on. So this is the kind of feeler I started coming in from the technicals as well as from the commercials. So when technical team was talking about that purchase, we अब उनसे माल खरीदना है तो we need to make the payment, and if we need to make the payment, then the money is very limited, but till the time will not clear their previous past dues, they are not going to make the payment. Then I called vendors meeting. Somehow I made them convinced, yes, I'll make you the payment. Just the moment the goods will be delivered, you will be getting the payment. I'll not charge even a single, say, 30 days 60 days credit period. I'll not go for that. The moment goods are delivered, you take money from me. This is the kind of assurance. But they were asking, I told them there are 2 scenarios in this particular case. If you want to lose your current business, it is up to you. If there is other people, those are also prevailing in the market, I can go with them and I can just buy that particular product from them as well. But I want whatever the kind of loss you have suffered, and that you will be filing in the form of claims and all. But एक चीज I just want to make sure your payment will be the first payment which will be paid, because this is a court administrative process. Everything is monitored by the court, and court will also make sure that your payment is made if any distribution or if any money is being taken. So somehow it took time just to convince them, and gradually they also started. Just पहले अगर हम उनसे बोलते हैं कि 10 लाख का माल दो, तो 10 का ना भेज के उनको बोला कि you start with 5 lakh rupees or 2 lakh rupees, the way you feel comfortable, and gradually you can increase the amount as well as the quantities for your comfort, as per the comfort. And the first thing, even all those sites which were abandoned, and there were certain sites which were running very very, slow pace of running, rather I should say. It was, you know crawling rather than I should say running. These were crawling stage. And all of a sudden I received a call from one of our power plant which is there in Nabinagar, far off in Bihar. So I got a call from the site head. सर, आपके आने के बाद यहाँ तो बंदों ने काम करना बंद कर दिया. मैंने कहा व्हाट्स द रीजन. जितने भी वर्कर्स थे, जितने भी एम्प्लॉइज थे, व्हाट दे हैव स्टार्टेड डूइंग इज दे हैव स्टार्टेड फिलिंग अप द फॉर्म्स. और अभी 3 दिन के बाद मिनिस्टर्स का उद्घाटन है, जिन्होंने ये आगे So everything has to be closed within 14 days, public announcement and all. क्योंकि उन्होंने public announcement देखा, public announcement देखने के बाद they started behaving like that. तो उन्होंने कहा कि काम सफर कर रहा है सर, and nobody is listening to me also. All entire work is now in standstill stage. What is to be done? On very next day, I just took a flight, went to Patna, and thereafter 7 8 hours of taxi travel, reached somehow in the evening. And again, I just convened one meeting of all the workers and staff, which are almost 80 to 90 people were there, those who were present at that point of time. And on very next day also, all those who could not attend the meeting on that day, I just made them convince also, and just made them sure that देखिए, मैं आपको यहाँ गारंटी देके जा रहा हूँ कि whatever is your amount of claim, I'll make sure just after you just go back to your work for 3 days, 4 days, whatever the remaining work is there, for which
the inauguration is stalled. तो आप वो काम करिए, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, आपका जो 14 डेज आए, जस्ट मेक श्योर आपके 90 दिन तक, बिकॉज एज पर द लॉ इट इज 90th डे द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द क्लेम एंड एडमिट द क्लेम। तब भी मैंने उन्हें ये बोला कि 90 दिन तक मैं आपके क्लेम एक्सेप्ट करूंगा। तो इसीलिए काम मत रोकिए, क्योंकि अगर आज आप काम रोक देंगे तो काम रुकने से चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो उनको कन्विंस किया, 2-3 घंटे उनके साथ रहा, सारा एक पॉजिटिव काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। फिर नेक्स्ट डे फिर 2-3 घंटे उनके साथ रह के उनको पूरा प्रोसेस समझा के, और वहाँ साइट हेड से मिलके, उनके कस्टमर से मिलके, क्लाइंट से मिलके, तो अल्टीमेटली आफ्टर 2 days of visit I just came back and I just went through the entire process of that plant. That plant is of BHEL. BHEL का प्लांट था जहाँ वो कोल से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम कर रहे थे, एंड सम ऑफ द portion units were in running condition, some were is on the verge of running. तो वो जो वो प्लांट था वहां पर विजिट करने के बाद आई जस्ट गॉट अ फीलर व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन। और वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी, बिकॉज व्हाट आई पर्सनली फील व्हेन वी गो इनटू टेक्निकल्स, बिकॉज टेक्निकल के अंदर हमारा अगर वो वर्किंग कंडीशन में है, ऑलरेडी कुछ एम्प्लॉयज़ वहाँ काम कर रहे हैं, दे विल गिव यू द रेफरेंस, दिस एम्प्लॉय इज गुड, दिस एम्प्लॉय इज बैड, उसमें आपको फिल्टर लगाना है कि वेदर ही इज जस्ट ऑन व्हाट ग्राउंड ही इज सेइंग यस और नो। वहाँ ये सारी चीज़ें हमने डील करने के बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ कि ये प्लांट का 5% काम बाकी है, जो पिछले 8 साल से काम हो रहा था। 95% हम कंप्लीट कर चुके हैं, 5% हम कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हमारा मेजर काम कंप्लीट हो जाएगा। एंड हमारी जो बैंक गारंटीज है, जो लगभग 8 से 10 करोड़ की बैंक गारंटी है, दैट विल ऑल्सो गेट रिलीज्ड। अब वहां पर इन्वेस्टमेंट कितनी थी? वहां इन्वेस्टमेंट थी लगभग 25 से 30 लाख रुपए की। 30 लाख रुपए की हमारी इन्वेस्टमेंट है, 10 करोड़ का हमारा जो बैंक गारंटी फंसा हुआ है, उसके बाद जो अमाउंट रिलीज होना है दैट इज अगेन 7 to 8 करोड़ विच विल बी रिलीज देयर आफ्टर। तो बिकॉज वो रिटेंशन और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो उनका था दैट विल बी रिलीज ऑन द कंप्लीशन। तो दिस इज हाउ आई जस्ट अंडरस्टूड फर्स्ट प्रोसेस वेयर आफ्टर गेटिंग इनटू दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि ये वाली चीज को हमें कैसे मैनेज करना है। And successfully, with that 2 days of meeting, finally that inauguration was done and that unit got started, and then I received it thank you letter for such a prompt action and making everyone convinced and all. तो टेक्निकल्स में बीइंग ए सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड इज ज्यादातर जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं जो ग्राउंड पे होनी है, दैट विल बी डेल्ट विद बाय दैट रिस्पेक्टिव टेक्निकल स्टाफ। हमें सबसे ज्यादा चीज किस चीज को मैनेज करनी है? उन टेक्निकल टीम को मैनेज करने का। वहां पर जो ऑलरेडी डीमोटिवेटेड टीम है उसके अंदर थोड़ा सा इंस्पिरेशन फूकना है, मोटिवेशन फूकना है। उसके बाद उनको ये एहसास कराना है कि यस, whatever has happened because of which the company has come into insolvency, but I'll make sure till the time I'm there, your salary will be given, you are in the safe hands, and the amount which will be given to you will be on the first priority. And say 1 or 2 months, give us the time and we will just smoothen the entire process. So today, if I talk about the scenario when I started, at that point of time, the company was carrying around, say, 20 lakh rupees in their bank account. And just because even the resolution plan has also come, it has been approved. And during that CIRP period, we were able to make it out. 20 crores of revenue we received. Even after all the expenditures, still today there are 7 to 8 crores which is lying in the bank balance. So all these things which we were able to, उसके बाद जो हमें ये पता लगा, these bank guarantees are on the verge of invocation. वो on the verge of invocation क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो काम है, these sites have been abandoned. Why these sites have been abandoned? Workers को उनकी पेमेंट नहीं मिली, वहाँ के एम्प्लॉयज जो हैं वो अपना थोड़ा पिलफिरेज और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो then I met again the top bosses of that particular organization and just made them convince, yes, उन्होंने कहा अब तो कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई, अब इसका कोई वाली वारिस नहीं है, तो इसीलिए हमें बैंक गारंटी इन्वोक करनी पड़ेगी, तो आपको 5 करोड़ जो है हम ये इन्वोक करेंगे।
मैंने कहा सर आई जस्ट मेक श्योर गिव अस ए टाइम ऑफ 1 month and just after 1 month you can take your decision because this is a request instruction information whatever the way you just want to treat it as because we are asking for 1 month time thereafter you can take whatever the decision you want if you want to invoke that particular bank guarantee you can invoke उन्होंने कहा okay 1 month given today that 1 month which was given at that point of time by that particular CEO of that unit that unit is also live today and the bank guarantee even after 1.5 year has not been invoked the site is in the running condition and all the things which were required at that point of time were installed and that site is also giving us the revenue as well so these challenges because what I personally felt with respect to the insolvency professional the role of insolvency professional is less of compliance and more of understanding the business and more of getting into the details of the business and so that this is an opportunity that god has given us if we can save something because it is already जैसे बोलते हैं ना टाइटैनिक is already on the verge of sinking so you being the responsible person, you with all the powers which have been assigned to us, with a great responsibility to save it from sinking. This is the first opportunity that is being given by that particular adjudicating authority to us, and taking that into account, उस चीज को ध्यान में रखते हुए we started our journey and today जितनी भी कंपनीज थी and more surprisingly I just wanted to share one incident I started getting the support of promoters also. How come the support of promoters also started coming in? Because there were certain challenges which they were facing with respect to all their non cooperation. Initially, I told them, he told me that this is our 40 years old company, 50 years old company. We have installed everything into this company. Whatever the things, our savings were there, that has been already into this company. All these emotional things were there. I told them one thing if you think of that whatever you have been giving to the company from day one, why can't you give this to the company today as well? आप ये मान के चलिए कि आपके पीछे ऑलरेडी इतने बैंकर्स की लाइन लगी हुई है आपके ऑलरेडी इतने प्रमोटर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की लाइन लगी हुई है इतनी सारी लिटिगेशंस चल रही है तो जहां पर भी कंपनी के अगेंस्ट की लिटिगेशन बिकॉज एज पर द कोड जहां पर भी कंपनी के अगेंस्ट की लिटिगेशन होगी आई विल नॉट बर्डन यू विद दैट पर्टिकुलर लिटिगेशन आई विल बी डूइंग ऑल द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर लिटिगेशन तो कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए आज के बाद आप नहीं जाएंगे कंपनी को रिप्रेजेंट हम करेंगे तो जितनी भी ऑलरेडी आपकी 150 लिटिगेशन हैं तो वो यू जस्ट थिंक ऑफ दैट हैज ऑलरेडी बीन बर्डनड ऑफ so that sharing of burden is already there sharing of load is there so in that scenario I want your technical assistance so they agreed for that somehow and then they started telling little bit of things with regard to the technical aspects because they were also engineers they knew technical more than me because I being a finance guy I was not aware of how to you know कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से कोयला कैसे जाएगा उसके बाद ये सारी चीज़ें कैसे होंगी यहाँ पर ये जो काम कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो आई स्टार्टेड इन्वॉल्विंग देम इनटू डे टू डे एक्टिविटीज और एक चीज़ हमें ध्यान रखना है व्हाट आई आल्सो लर्न एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी आप किसी को पर्सनल मत बोलिए क्योंकि अगर हम पर्सनल बोलते हैं और वो पर्सनल ले जाता है तो हम प्रोसेस से हट के काम कर रहे हैं जैसे एक एक इंसिडेंट आता है जहां पर मान लीजिए कोई ऐसा इंसिडेंट आया जिसमें मुझे ये बोलना पड़ा कि ये आपने गलत किया और मुझे ये बोलना पड़ा कि ये आपने गलत किया है तो वहां पर मेरा जो लैंग्वेज है रादर देन स्ट्रेट अवे पॉइंटिंग हिम आउट कि ये आपने गलत किया है तो सिर्फ ये हम पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज द बेटर वे दिस कुड हैव बीन डन तो अल्टीमेटली व्हेन आई एम सेइंग कि आपने ये गलत किया है तो इसको हम और अच्छा कैसे कर सकते थे व्हाट कुड हैव बीन द बेस्ट वे
So is there any other way out? So this is how we need to use that language. क्योंकि एक जब मैं ढाबे पे गया हुआ था, वहाँ जब साइट पे गया था, तो there was a you know ढाबा owner, what he was telling to his boy, उसने कहा कि ध्यान से तेज मत बोल, क्योंकि यही जो तेरा मुंह है यही तुझे पान खिलाएगा और यही मुंह है जो तुझे जूता खिलाएगा. So I also captured that ultimately whatever the kind of communication we will use with our peers, seniors, with our customers, with our promoters and all. So ultimately, whether they will cooperate or non-cooperate, it is our communication that creates a lot of impact. And that kind of management, we just try to make it happen. And to my team also, I just made them aware of, we will not point out to a person, because we are part of process. We will be dealing with the process and we will be talking about the process. Rather than talking about a person, we will be talking about a process. So in that particular process, if there is anything to be said, so you will mention section first and you will tell it has to be done in this way. Though the powers of directions are there, but still we will just try to request them. First we will request, thereafter we will state, and thereafter we will instruct. It cannot be straight away first mail instructing them to just perform, because everybody wants respect. So the designation and respect, that we got the designation, but to get the respect we need to work hard. We need to be very very soft in our language. We need to use all tools and techniques which are there as a management guy. We need to just think of how it can be managed and how I will not be pinching to that particular person by stating a particular sentence. So the communication is the key if we are going into insolvency professional business. And then when we are going for the technicals, so technical understanding of the business, Google is also available, YouTubes are also available. The kind of business understanding we get to know in say 6 months to 8 months it take up when we go into deep details, because every day we learn. And the kind of more business we will be dealing with, and the company is already a going concern, you will be learning day in day out. And controlling the company which is widely scattered is also a very very challenging task. जैसे जब आपका एक साइट आपकी मान लीजिए दिल्ली में है, एक साइट बिहार में है, एक साइट बोकारो, एक साइड आपके भटिंडा में है, एक साइड आपकी कोची में है, एक साइड आपकी जम्मू में है. एंड हाउ people we have as a insolvency professional, if I just think of how many team members we can depute, appoint, and take care of the entire custody and control, if we are just talking about. So ultimately, we need to take support from all those people, those who are already there in the system. And they initially, I just make you aware also, initially they will listen to their promoters who has been giving them salary from last 40 years, 30 years. What and the kind of information which you will receive will be the information which has already been designed and manipulated, or you know which is available on public records. So these kind of information initially we will receive, and we need to filter it out. And all these things will be understood clearly on the paper, but straight away if you start hitting that particular language on them, so they will also become defensive, and either they will stop providing the information or they will just do as per what he says. So gradually what you need to do is you need to start building your rapport with them, sitting with them, understanding what they are doing, getting the pain and all. And gradually you just think of what how to get into their heart. So this is how the business needs to be run. So gradually when you they will also, because till the time we will not win their trust, we will not get the information. We will get the information, whatever the information they want to give us. By filing 19.2, will I be able to get all the information? No. By filing all other applications, will I be able to get complete information? No. So all these information which are available either on MCA or the data which they want to give will be provided. But if you want whatever is the relevant information for the purpose of business, for the purpose of process, will be provided once we start winning their heart. So this concept, that is the reason initially you
straight away, first thing generally what I also got to know, सबसे पहले ये बोला जाता है 19.2 फाइल कर दो, बिकॉज वेन वी हैव ऑलरेडी फाइल्ड 19.2 वी आर इन द सेफ हैंड्स. कुछ भी हमसे पूछा जाएगा तो वी विल से कि 19.2 फाइल की हुई है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रमोटर से लेनी है. बट if I am filing 19.2 application for non-cooperation and the people are cooperating, so I am already on the different line which is not required. Though legally it may feel sound, yes, 19.2 should be filed. बट 19.2 फाइलिंग का मतलब ये है कि मैंने अगर 19.2 फाइल करनी भी है ना, तो मुझे ये चीज अपने प्रमोटर्स को भी बतानी होगी कि सर आपने बोला कि ये वाली इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया, बट स्टिल इफ यू हैव सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन तो मुझे ये कोर्ट के नॉलेज में भी लानी होगी कि ये आपने नहीं प्रोवाइड की. तो वो जब हम उनको बोलते हैं कि कोर्ट की नॉलेज में लानी होगी, तो इसीलिए मुझे 19.2 फाइल करनी पड़ेगी. और आप वहां अपना ये एफिडेविट पे दे देंगे तो आपका कंप्लायंस हो जाएगा, मेरा कंप्लायंस हो जाएगा, तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी. बट इफ यू आर सेइंग दैट यस दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल विद मी एंड देयर इज कॉन्टिन्यूस रिफ्ट दैट इज गोइंग ऑन, तब वहां पर चीजें एंटायर प्रोसेस विल गो एंड यू विल नॉट गेट द इंफॉर्मेशन. आप क्योंकि आपको मालूम है कि एनसीएलटी ऑलरेडी ओवरबर्डन है. 19.2 की एक एप्लीकेशन मैंने एक मैटर में लगाई थी इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर 2019, और आज तक वो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ नहीं. तो वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ 19.2. तो वो पूरी प्रोसेस के अंदर ऑलरेडी हमारे 2 साल 1.5 साल जो ये निकल गए, इस पूरी प्रोसेस को हम रन कैसे करें. लीगली तो अगर मैं बोलूं कि आई हैव डन माय जॉब, बट then there comes moral responsibility, ethics, and my efforts which could have been done in the right direction by just doing whatever the best I could have done. वो 19.2 की जो एप्लीकेशन लगाई उससे पहले मैं ऑलरेडी 2 बार प्रमोटर से मिला. प्रमोटर्स ने 2015 तक की डिटेल्स फाइल की हुई थी एंड देयर आफ्टर इवन द प्रमोटर्स वर नॉट अवेलेबल, रजिस्टर्ड ऑफिस वाज नॉट अवेलेबल एंड दे वर एब्सकॉन्डिंग एट ऑल. एंड उनसे जब नेक्स्ट टाइम मिलने गए तो वहां वो जगह भी नहीं, अब पूरी डिटेल्स कुछ भी अवेलेबल नहीं है. एंड आफ्टर ऑलरेडी 2 years you will be surprised to know not even a single data and not even a single appearance from the side of promoters has been there. तो वहां उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कैसे रन करें, देन इट बिकम्स a standstill process. Ultimately financial criteria also say okay let us dissolve it because there is no asset, there is nothing available, what will be doing. और उस सिचुएशन के अंदर commercial decision is to be taken by the COC because commercial wisdom lies with the COC how to go about. From very second month onwards I started saying to the financial creditor there is nothing in the company. Today we are asking yes let us fight for the company. 6 months down the line you will fighting with me why to pay the money, but I don't want that to happen. But I am just saying this is because of when there is nothing available in the company, you being unsecured creditor, there is no asset in the company, I'm asking you to contribute, you are forcing me, okay we want to run the process because this process is very good, this will be able to get the recoveries and all. So I told them very clearly sir आज की डेट में my personal, if you just go think of from a bigger perspective, what will I get. आपके पास जो एसेट्स हैं ऑलरेडी वो पर्सनल एसेट्स हैं उनकी, आप सरफेसी वो सारे सेक्शंस वो यूज करके आप उसको मैच्योर कर सकते हैं. कंपनी से आपको क्या मिलेगा अगर इफ आई एम, क्योंकि मैंने जितना भी कंपनी का एनालिसिस किया 15 की बैलेंस शीट के बाद 3 साल की बैलेंस शीट है ही नहीं उसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें डायरेक्टर्स प्रमोटर्स अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी एब्सकॉन्डिंग है, बैकग्राउंड उनका ठीक नहीं है, सिविल ऑलरेडी खराब है. तो सारी चीज़ें जो हमने एनालाइज करने के बाद भी उनको कहा कि उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास ऊपर से इस चीज़ का अप्रूवल नहीं आया. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड 6 months down the line again what I said with regard to the fee that started happening up कि हम आपको फीस कैसे पे करें, what you have done to run the process, the सारी चीजें that is already there in the record. तो ultimately I also understood on very second month this is going to happen. Why? Because the relationship
Whether it is my personal, whether it is my professional, any relationship that works only when it is win-win situation. If there is win-lose situation, lose-lose situation, lose-win situation, so that kind of relationship is not going to work any time. So initially it may just be a compromise. If there is winning losing situation, initially there may be compromise, but it will not go for a long run. So that kind of understanding I need to understand. Okay, if there is win lose situation, that relationship today or tomorrow will come to an end. So that's the reason on very second month I told them कि आज आप मुझे कह रहे हैं प्रोसेस चलाएं, आई एम हैप्पीली रनिंग इट, and there is nothing I will be losing because I will be getting my fee. But why I am saying so? Because all these things which are available with you and available with me is not supporting it. So thereafter, there were two financial criteria in that. Thereafter, 6 months down the line, when I initially 2 3 months they were making the payment of fee, and then they thereafter they were not contributing, and I was continuously following it up. And then what was the last resort which was available with me to file an application against the financial director for the fee. So which I did not want from very first day, that you being the creditors, you are here for your recovery, ultimately will be ending up making the payment for, you will be in a losing state. But I don't want that you lose more. That's the reason you take your decision. That's your commercial call. और 6 महीने के बाद आज तक again that kind of litigation against the financial criteria is also going on. So these kind of situation pop up when you know that these situation will pop up in the future because of the things which are present today. And there it becomes a commercial issue whether to run the process or not, whether to go for filing and not, whether to pursue this particular case or not. Because once the case has been assigned, it cannot be relieved till the time there is no replacement. Right? It has to be replaced by another resolution professional. The person who is already fighting for his fee, there will be no other resolution professional who will be taking that particular position where the fee is not there, where the financial creditors are not making the payment of fee. So these, in these situations, you end up that you have to perform your duties till the completion of that process, either in the form of liquidation where you will not give your consent to become a liquidator and all, where then court will appoint and all that stuff. So these commercial issues, when the company is not in a going concern stage, when there is no source of revenue that is available with the corporate data. So technical we have already dealt with these kind of commercial issues. Then there are certain cases where we have been giving consulting with respect to the home buyers cases. Why I'm taking these are the specific where these commercial issues take place. In home buyers cases where the home buyers, where the promoter is not building their dream homes, and already installed projects are there everywhere, there is all these allottees are filing an application into NCLT and for their recovery, for initiation of CIRP. When the resolution professional or IRP is being appointed, what happens to him next? टू रन द प्रोसेस, वहां पर पूरी उसको सिक्योरिटी भी अरेंज करनी है, कस्टडी भी लेना है, कंट्रोल भी लेना है। जब वो कहते हैं ना, व्हेन ए पर्सन इज ऑर्फन्ड, देयर आर सो मेनी, ऑल दीज vultures also start coming in to take that money out, either by fair or foul means. So that fair and foul means which are being used to recovery, that also need to be stopped. How this will be stopped in that particular situation? There then this, that fencing, boundaries, security, people that need to be appointed, who will make the payment then the question comes in, who will make the payment to all those? One, I'm not getting the fee, that's fine, but ultimately to perform all my duties which are assigned in the court, to make the corporate debtor as a going concern, to keep them live. So all these things ultimately to protect and preserve the assets of the corporate debtor, that is also the responsibility of the resolution professional. So when
I'm appointing any valuer, transaction auditor, statutory auditor. Compliance is also again a responsibility. Filing of forms of IBPI, that is also with respect to that particular corporate. So all these also involves a cost. So who will make the payment? There all these commercial issues that comes in. So when appointment of advocates, appointment of professionals, so they are carrying a cost. Some of the professional may just, you know, not ask fee in very first month. तो उसके बाद क्या होगा, आफ्टर 2 or 3 months दे विल स्टार्ट, यार कुछ तो करा दो. तो घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, दैट काइंड ऑफ स्टार्ट थिंग्स स्टार्ट कमिंग इन. तो वहां उस पर्टिकुलर सिचुएशन में व्हाट वी प्रपोज टू आवर COC members is the raising of interim finance. So the raising of interim finance initially, कोई भी बैंक जो है उसमें इस तरह का कोई SOP नहीं है जिसके हिसाब से वो फाइनेंस को रेज करें. इवन आज भी वो सिचुएशन है कि जहां पर इस तरह का कोई मैकेनिज्म स्ट्रेट अवे नहीं है कि दो वी से इट इज सुपर सिक्योर्ड फंड, वट एवर द फाइनेंस विच विल बी प्रोवाइडेड, that will be super secured. This will be first into CIRP cost, again will be distributed on the top priority. But everybody, you know, just when they hear the companies into NCLT, तो वो आपको प्राइवेट फंडिंग जो है वो वहां से आएगी नहीं, क्योंकि वो कहता है कोर्ट का मामला है, जस्ट स्टे अवे. तो it is just because of court only their money is getting secured, but when they are not being aware of this particular process, they just want to keep them away from that particular funding and all. So these kind of challenges, yes, we also faced, and somehow, yes, from one of the source we could arrange that funding, interim finance. अब वहां पर there are two ways by which we can raise the finance. One is internal contribution. Internal contribution will be say 5,000 or 10,000 from each of the home buyer. In certain cases in liquidation, there have been the judgments where the contribution is to be made at the time of submission of claim, where when the contribution is being made by the contributories, then only the claim will be admitted and all. So that support which is already there from the adjudicating authority at the time of liquidation. But when we are asking for interim finance, these are the commercial challenges which I'm talking about will be there when we will be dealing where there is no liquid asset which is available, where there is no cash that is available. So, and sometimes whether to sell that particular asset or not during CIRP, that also is a challenge. So that is also a commercial call that needs to be taken at that point of time, situation to situation. There is already a scrap that is lying on. So what to do, whether to sell that particular asset or not. There are the provisions in the code which gives the permission, yes, you can just go ahead. But to be on the safer side, what we do is we just go to the COC and inform them these are the things which are going on. Though it is not part of asset, this is a part of goods. So that's the reason we are just selling it off and for the purpose of generating the revenue. And there are certain perishable assets जिसकी कुछ जैसे FMCG आइटम्स हैं या कुछ हम देखते हैं जिसकी शॉर्ट एक्सपायरी है. आज की डेट में अगर हम उसको बेचते हैं तो कुछ पैसा मिल जाएगा, और अगर फ्यूचर में अगर उसको बेचेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा. तो इस तरह के वो जो कमर्शियल डिसीजन है दैट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैज टू टेक. तो वो शॉर्ट एक्सपायरी जो चीज़ें हैं जिसके अंदर वैल्यूएशन भी हमें करानी है, उसको रन करने के लिए अगर हम उस चीज़ को जितना फास्ट कराएंगे उतना ही हम उस चीज़ को लीगली जस्टिफाई कर पाएंगे कि ये चीज़ हम कर पाए. क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इंतजार करता हूँ आफ्टर बीइंग ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल 7 दिन मीन्स नॉट लेटर देन 47th डे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यूएशन, व्हेन आई एम अवेयर ऑफ कि भाई 2-3 महीने की तो इसकी एक्सपायरी है और वो अपना टाइम लेगा, व्हाई नॉट टू गो एंड जस्ट टेक द वैल्यूअर्स अपॉइंटमेंट. ओके, यू जस्ट गो अहेड, वट एवर द थिंग्स विल बी डन. COC के जो मेन मेंबर्स हैं वहां पर हमें कमर्शियल डिसीजन ये लेना होता है कि जो COC के मेंबर्स हैं, मेन मेंबर्स, लेट अस से द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, from the balance sheet you got to know that these are the two main financial creditors carrying already 80% of the voting rights. We just take them into loop that these are the steps which you are taking up and inform them. Because ultimately why we are taking these fast decisions, because if we will not take these decisions, this will end up in the loss of assets. So protect, preserve. The preservation of assets is also, these are the best practices which is nowhere mentioned in the law, but this situation make us aware of.
So these are the things which we need to take immediate action so that the loss can be avoided. So these are the technical and commercial issues which I felt should be taking due diligence, whatever my prudent mind said at that point of time. So these technical and commercial issues I dealt with when I was dealing these situations. So in the meanwhile, we can just receive few questions from the respected members, those who are participating. So that will be, you know, make us interactive, and a brainstorming can be, happen. So participants can unmute themselves and they can ask questions now, or they can even write in the chat box. No question. That's There are two situations in that. Either everything is clear or all clear. सर मुझे लग रहा है कि मेंबर्स आर फीलिंग मेस्मराइज्ड बाय योर डिलिब्रेशन. अच्छा लग रहा है काफी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. Really mesmerized, sir. Really mesmerized. क्योंकि होता क्या है सर, मैंने आई हैव आल्सो बीन डीलिंग विद वेरियस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, उनसे रेगुलर बात होती रहती है. तो द फर्स्ट सेंटेंस यू टोल्ड कि वो ऐसा समझते हैं कि वो कंपनी के मालिक बन गए, वो डराने की कोशिश करते हैं प्रोमोटर्स को. एंड यू जस्ट hit that point below the belt. That was really very nice of you, and definitely such insights they help all the budding professionals, insolvency professionals, in understanding their job in a better light. Right, sir. Right. तो गुड प्लीज इवनिंग कंटिन्यू. सर. हाँ जी, हामिद जी बोलिए. हाँ जी. हाँ सर, वन क्वेरी. Please. हाँ, एक्चुअली ये रिसेंटली भी अभी एग्जाम में भी आया था कि ड्यूटी क्या है आरपी की, अगर आरपी अपॉइंट होता है. सपोज कोई एफएमसीजी कंपनी है, हाँ जी. उसकी सीआईआरपी शुरू हुई है और वहां पे उन्होंने कोई सिक्योरिटी नहीं है, जो पिलफरेज हो रही है, जो स्टॉक की पिलफरेज हो रही है और वहां के एम्प्लॉयज ही कर रहे हैं. तो अब बिल्कुल. उसकी ड्यूटी आरपी क्या होनी चाहिए? पहले वो टैग बनवाए सबके कि वो उसको एंटर करने के लिए कोई उनको पासेस दे कि कोई भी जो एंटर करेगा वो बिना पास के एंटर ना कर पाए, या फिर उसकी सिक्योरिटी करे, स्टॉक की सिक्योरिटी करे. मतलब व्हाट शुड बी द माइंडसेट ऑफ द आरपी एट दैट टाइम? सर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सिचुएशन, जैसा आपने बताया कि वहां पिलफिरेज है. जी. पिलफिरेज एम्प्लॉयज किस लिए करते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है कि नाउ इट इज ऑर्फन अनअटेंडेड. ये ऑफ माइंड है. वहां पर जो एक मुझे अपना बंदा एक ये अपॉइंट करना होगा सबसे पहला, कि वो जो मेरा एम्प्लॉय है या मेरा जो टीम मेंबर है, ही विल बी डिप्यूटेड ओवर देयर एंड ही विल बी कैरिंग ऑल दिस कीज. तो वो कंट्रोल, सबसे पहले कंट्रोल, क्योंकि जैसे सर हमने देखा है कि हम ऑडिट में भी करते हैं, तो एक प्रोसेस डिजाइन करते हैं जिससे वो जो अल्टीमेटली उसमें जो लीकेजेस हैं वो खत्म हो जाए. तो वो जो प्रोसेस हम डिजाइन करते हैं वहां पर एफएमसीजी के अंदर सबसे पहले जब हम बोलते हैं कि आरपी और आईआरपी नीड टू टेक द कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कस्टडी, if the pilferage is taking place, so I could not take the custody and control, so and protect and preserve the assets, so how I will be able to make it happen. अब ये सिचुएशन कब होती है? क्योंकि हम जब ये सोचते हैं कि ये 4 केस लूंगा, मैं 5 केस लूंगा या 7 केस लूंगा, और मेरे पास टीम स्ट्रेंथ उतनी नहीं होती. नंबर ऑफ केसेस, इफ आई जस्ट टेक अप मोर एंड आई एम नॉट एबल टू हैंडल टू मेनी असाइनमेंट्स. सो एंड अगर सर 2 कंपनी हमारे पास गोइंग कंसर्न आ जाती है ना, तो ये मान के चलो कि जीना हराम हो जाता. तो पर वहां पर जो प्रैक्टिकली आई ऑल्सो फेल्ट, सर उस सिचुएशन के अंदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऐसी चीजें होती हैं कि वो रनिंग स्टेज से क्लोजिंग डाउन स्टेज में चली जाती हैं. तो जो रनिंग स्टेज से क्लोजिंग डाउन स्टेज में चली गई, लॉसेस हमारे बढ़ने शुरू हो गए,
और फिर उसके बाद प्रूडेंट कॉल जिसे हम बोलते हैं कि हमने वो कंपनी बंद कर दी बिकॉज वी वर रनिंग इनटू लॉसेस। सर लॉस के पीछे जो मुझे अभी तक जो समझ आया कि 2-3 चीजें होती हैं, ईदर माई कॉस्ट इज मोर, माई रेवेन्यू इज लेस। यही नॉर्मली हम बोलते हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द लॉस, why I'm not able to touch the break even point. So if my cost is more, that is in the form of pilferage or in the form of employees, fixed or variable cost, तो सर वहां पर मेरा एक महीना फर्स्ट मंथ हो सकता है जिसके अंदर मेरी कॉस्ट ज्यादा है, बट सेकेंड मंथ अगर मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो मुझे दोबारा कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी सबसे पहले कि कौन कौन से बंदे, बिकॉज आई व्हाट आई फील इज मैन पावर इज माई एसेट एंड मैन पावर इज माई लाइबिलिटी. So manpower is asset only when they are working for the company. Manpower becomes liability when they are working for themselves. So when they are working for the company and when they are working for themselves, these need to be combined. How I just motivate them and just convince them this is my way of dealing with the situation. सबसे पहले तो मैं ये पूछता हूँ, when you just go for the introduction and all, I just initially ask, okay, you are working for the company or you are working for yourself? He says I'm working for the company. मैंने कहा no, you are working for yourself and your family. Company is a mean of it. When you are working for yourself and your family, just make sure whatever is being given to your family should be pure one. तो जब आप कुछ भी अपनी फैमिली को दें तो वो उसकी फैमिली के पास वो चीज सही जानी चाहिए, गलत नहीं जानी चाहिए. अगर वो चीज गलत जाती है देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फैमिली. तो थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल एलिमेंट जब हम उसमें डालते हैं तो फिर उसके बाद जब वो उठाने लगेगा तो होपफुली हम ये मानते हैं 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार जब हम उनको कॉन्टिन्यूसली ये ड्रिल करते हैं तो व्हाट आई लर्नड, व्हाई द पर्सन इज taking a bullet on his chest for 25 or 30,000 on the border. So there is something which is there in the mind which is being informed and sold to them. Okay, whatever you are working, it is not for the money. There is something else that is you are working for. % तो हम 100% कोशिश हम इतनी करते हैं कि जो चीज पहले 90% हो रही थी उसको इनिशियली हम 50 पे लेके आए, 50 से 30 पे लेके आए, 30 से 20 पे, बिकॉज दैट विल टेक टाइम. हम उनको जितना प्रोसेस, क्योंकि हमारे पास टीम साइज कम होता है, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट, ICWS, how much team members we can afford when the company is into CIRP. Initially basically what happens is हमारे पास 8 या 10 बंदे होते हैं. वो 8-10 बंदे हैं तो उन 10 बंदों से मुझे 2 अगर गोइंग कंसर्न रन करानी है डिफरेंट साइट्स के ऊपर तो दैट इज इम्पॉसिबल टास्क. वेयर 20 साइट्स आर देयर, आई नीड टू गेट इट. विजय जी पूछिए, विजय जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं. विजय शर्मा जी. Mr. Taneja, यस सर. can I ask a question? I'm Siddharth Pal. हाँ जी सिद्धार्थ. Hi, sir. Actually, we know that this specifically this IBC code or this resolution process is for turnaround, not for liquidation. So unfortunately, we are continuously looking liquidation is going on, which you are also telling. So the point is that the major problem what we are looking or understanding, interim finance, which COC is not ready to provide, which we are looking in many cases. As per your experience, you have handled so many cases. Just let us know if the COC is not ready to provide the interim finance, what is the next step or what is the way out actually? Yes, what you told already, you are putting in front of the, AA actually, that you are not getting cooperation from COC or finance. But this is not the way out to run the company because it's a head-on collision will start. So what is the option? Another second option? Yes, now in... And sir, before we take up the answer, we can ask Vijay Sharma ji also, so that both the questions can be taken up. Vijay Sharma ji पूछिए, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? थैंक यू सर. फिर मैं पूछना चाह रहा था, एक क्वेश्चन था, एग्जाम का क्वेश्चन था ये. उसमें ये पूछता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू टेक ओवर द चार्ज ऑफ द कंपनी, the security guards are not allowing you to enter the premises or not, they are not handing over the charge.
Now, but the option which you will exercise, whether just reporting to adjudicating authority, or you will take the help of the police or make some other arrangement. But the right way out for as a practical or a theoretical for the sake of examination. Can you please explain? Yes. So the question with regard to Siddharji, with regard to interim finance, thereafter I'll take up what happens when the security is not allowing you to enter into the premises. So interim finance situation, now some of the banks have started, formulating their SOPs with regard to the interim finance. So SBI is taking lead into it. And this process, say another 2-3 months more, and there are certain, financial institutions also have come forward in which they are providing the interim finance. We have also started receiving the mails that if you need any interim finance to run the CIRP and all, so you can contact us. These kind of things have started coming in, which was not available earlier. Second, whether COC is giving approval for that interim finance. COC gives the approval for interim finance when it is, not being burdened on the COC. At that point of time, we need to convince them. So this CIRP cost, which is being incurred, and why I'm asking, one is to run the process, second is to run the company. There are two scenarios when I'm asking for, if I'm supposed to run the process. So that I will be doing with a minimum kind of expenditure. If I'm running a corporate debtor, then I'm maintaining, preserving, and growing the value of that corporate debtor. So that will be helping me in the resolution. So when I'm making all these expenditure for the purpose of interim finance, I will be just making myself sure. So these expenditure, because cost versus value, that I need to just understand if I'm able to retain that value, if I'm able to grow that value, then I'll be convincingly presenting my interim finance resolution to the COC members. And they also understand, yes, if I'm going for this particular expenditure, say 10 lakh, 15 lakh, 20 lakh rupees, or say if it is a bigger one, say 1 crore, 2 crores. So with that, the value which is available otherwise will get diminished. So that kind of conviction, if first is, if I myself is convinced, then I'll be able to present to the COC member convincingly. If I myself is not convinced, then I'll not be able to present to COC members also that convincingly. Understand. I understand. Yes. Thanks a lot. Thanks a lot. Second, Sir, just 1 minute, sir. What yes, I am please. the scenario I am asking, that suppose the COC is being convinced with your Yes. value proposition, but they are not ready to further pay any more amount. But will you be allowed that point of time to go to the NBFCs or something else to secure Yes. unsecured credit sort of When thing? you are proposing a resolution, when you are proposing a resolution to COC member for raising interim finance, you will be proposing the terms and conditions also of that interim finance. So what will be the rate of interest? What will be the security if it is available with the company, or if there is no security, then unsecured proposing. So that all terms and conditions will be there in the resolution when we are proposing it to the COC members for their approval. Because it is there, I believe, under section 28. If I'm raising that interim finance, that need to be approved by 66%. So then only I'll be able to just pass that, hurdle to get the finance. Straight away taking the interim finance from third party may not be the solution, because ultimately you will end up making those interest and other payments, because you will be getting all those costs which has been approved by COC. So Thanks a lot, sir. Thanks a lot. Yes. Yeah. एंड सेकेंड क्वेश्चन विद रिगार्ड टू जो विजय जी ने पूछा कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं आने देते. What I personally felt initially, yes, in very first year, these kind of challenges were there, where the IRP was kidnapped, where the IRP was beaten up, where the FIRs were lodged against IRP, where even nothing was being provided, not allowing him to enter. 4 बंदे जा रहे हैं तो उनको ताला ही बंद कर दिया. So these kind of situation, these were there
when the IBC aspect was not clear to them also, because that law was evolving and very initial stage. ये चीजें हमारे साथ भी हुई initially, but from last 1.5 year वहाँ चाबी देने में अब उनको दिक्कत नहीं है, इंफॉर्मेशन देने में दिक्कत है. चाबी है वो दे देते हैं आपको, प्रीमाइसिस दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, बट व्हेन यू आर आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन दे विल नॉट गिव यू द इंफॉर्मेशन, बिकॉज initially even the lawyers which they had in their team, they were not updated to IBC, but today they are also updated. They hire legal professionals as soon as the process starts up, so they also drive in a professional manner. So with regard to filing FIR, with regard to not giving the keys and all, so this kind of things are not happening in nowadays. But the kind of things which are happening is not non-availability of the information. But yes, in one or two cases where this kind of situation may pop up, when though it is very less chance, but if this kind of situation pops up, then yes, 19.2 is the option, and getting the direction from the tribunal for that particular DCP and police authorities for cooperation and assisting taking the control. Sir, I would like you to throw some light on this accommodation entries also. Certain entries are appearing on the debit side of a company which is under CIRP. Now, but they are actually accommodation entries and actually nothing is payable. So, how to counter such situations? Whether we can take the auditor of that company whose entries are appearing, Yes. उनके लिए भी प्रॉब्लम है. वो अगर ये बोलते हैं भाई एकोमोडेशन एंट्री है तो दिक्कत है, अगर नहीं बोलते तो वो कहते हैं भाई फिर तो ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? अब डेबिट साइड में एंट्रीज आ रही है, 3 करोड़ रुपए की एंट्री है, सन्ड्री डेटर में पड़ी है. बिल्कुल. और वो जो एंट्रीज हैं, जब हम उन एंट्रीज को देखते हैं तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कितने सालों से ये एंट्री पड़ी है और कितने हमने एफर्ट्स किए उस रिकवरी के लिए. अगर हमने रिकवरी का कोई एफर्ट ही नहीं किया और हमने फिर उनको लेटर लिखा, तो वहां से हम उनके खिलाफ क्या करते हैं, कुछ थोड़े से टाइट लेटर्स लिखते हैं जिसके अंदर हम उनको सेक्शन 8 नोटिसेस और इस तरह की चीजें करते हैं कि भाई या तो वो डर के सच बताएंगे, नहीं तो हम उनके खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर देंगे. और ये जो एकोमोडेशन एंट्रीज हैं हमें मालूम है, बट वी विल नॉट treat them as accommodation entries. Yes. We'll fight for those entries. Ultimately, they will be just either making the payment or will be requesting us or will be pressurizing the promoter to, just get it done, how it will be done, and ये वो तुमने हमें फंसा दिया, ये कर दिया, ये सब कर दिया. So these kind of situation comes up. So at that point of time, as a resolution professional, I will treat that entry as a genuine entry and will make all efforts just to recover that amount. Thank you, sir. Please proceed. So then it comes. So I believe technical and commercial we have covered. A little bit of ethical side. Excuse me, sir. Just a sec. जैसे हमने डेबिट एंट्रीज की बात की है, same is true with the credit side. मतलब हमने unsecured loans हमने जैसे जमा किए हैं. Sir, unsecured loan में तो आप safe है ना. Whatever is being there in the books and if he is able to give the proof, तो उसको मिलना तो कुछ है नहीं. आपने क्लेम उसका जो एडमिट किया, अल्टीमेटली दैट इज अनसिक्योर्ड. सिक्योर्ड उसके ऊपर ही खड़ा है. वैल्यू ऑफ एसेट्स उसकी कमी है वहां पर. और वो रिलेटेड पार्टी अगर आया तो वैसे भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट रिलेटेड पार्टी को तो कुछ देता ही नहीं है. बट इफ इट इज प्रूव्ड दैट दीज एंट्रीज आर द फेक वन, वी आर नॉट गोइंग टू एडमिट एनी क्लेम. इस सिचुएशन में मैं आपको एक अभी आपके साथ शेयर करता हूँ प्रैक्टिकली which we have dealt with. एक क्लेम हमारे पास आया, वो प्रीमाइसिस जो है उसका साइट ऑफिस है, वो रेंटल है. उन्होंने कहा जब वो क्लेम हमारे पास भेजा तो पिछले 3 साल से रेंट की पेमेंट नहीं हुई. Sir, this session is being recorded. We want it to be recorded or we should discontinue? हाँ, I'm just okay taking a situation. Okay sir. Okay. तो वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में 3 साल से रेंट की पेमेंट नहीं हुई. अब वो
3 साल से जो रेंट की पेमेंट नहीं हुई, तो हमने उससे ये पूछा कि भाई ये आपको पैसा नहीं मिला, आप ये बताएं कि आपने कुछ ऐसा कोई एक्शन लिया जिसकी वजह से ये कुछ नोटिस भेजा हो, क्योंकि आपकी लीज डीड ये बोलती है कि 2 महीने अगर पेमेंट नहीं मिलेगी तो मैं एविक्शन नोटिस, रिकवरी नोटिस और ये सब भेजूँ। तो पिछले 3 साल से आपने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, तो व्हाट इज द स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दैट? और आप मुझे अपने ओनरशिप डॉक्यूमेंट भी भेजिए कि ये प्रॉपर्टी आपकी है। तो जैसे ही मैंने उनको बोला ओनरशिप डॉक्यूमेंट भेजिए, तो ही विथड्रू हिज क्लेम। So these situation where as per the books of account, if I just go by the books of account, it is being reflected in those books. But to understand कि भाई 2-3 साल से पेमेंट नहीं मिली और सामने वाला बंदा भी शांत है, ये भी शांत है, प्रीमाइसिस के ऊपर कोई नोटिस नहीं गया, so these actually creates a question mark why it is happening up. तो उस तरह की जो लाइबिलिटीज जो हमारे उसमें दिखाई देती है, तो वहां थोड़ा सा हम ड्रिलिंग करते हैं, तो इधर दे विल विड्रॉ देयर क्लेम्स और दे विल प्रूव दैट यस दिस इज अ जेन्युइन वन। ठीक है सर, राइट सर, राइट। उसके नेटिव में जाना पड़ेगा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर। सर ये पूछ रहा था मैं कि कई लोग जैसे एडवांस अगेंस्ट प्रॉपर्टी बुक्स में चला आ रहा होता है और उसमें कोई वो वर्किंग होती नहीं, ना कोई ऑडिटर रिपोर्ट में पॉइंट होते हैं, तब ऐसे केस में क्या होगा? क्योंकि एडवांस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के नाम से खड़ा कर रखा है उन्होंने, और एडवांस अगेंस्ट प्रॉपर्टी वो कहता है जी हमारा तो एग्रीमेंट है, बैक डेट का उनका एक एग्रीमेंट होता है, उसमें वो अमाउंट इतनी ज्यादा लिखी होती है कि ना तो हम उसको पे कर पाएंगे, ना उसको मतलब मैच्योर करवा पाएंगे एग्रीमेंट। बिल्कुल। तो वो जो उन्होंने, हम मान के चलते हैं या हमने एडवांस दिया है या एडवांस लिया है, दो ही सिचुएशन हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी। अगर हमने एडवांस दिया हुआ है तो हमें रिकवरी करनी है, और अगर हमने एडवांस लिया हुआ है तो वो हमसे हमारे पास क्लेम फाइल करेगा। बिल्कुल। तो जब वो क्लेम फाइल करेगा तो वो उसका अनसिक्योर्ड डेट है, एंट्री अगर आई होगी तो बुक्स में दिखाई देगी। बिल्कुल। और उसके बदले क्या ट्रीटमेंट हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है कि वो फ्रॉडुलेंट है या उसकी जेन्युइन वन है। तो जहां अगर मुझे रिकवरी करनी है तो मैं उसको एड्रेस भेजूंगा, सेक्शन जो अपने रिस्पेक्टिव, अगर मेरे वो फाइनेंशियल डेट में आता है तो मैं उसको फाइनेंशियल उसके हिसाब से लेटर भेजूंगा, लीगल नोटिसेस भेजूंगा, रिकवरी के सारे एफर्ट्स, बिकॉज आई विल नॉट ट्रीट दैट दिस इज अ फेक एंट्री इफ आई हैव टू रिकवर। आई विल, वो उसको मालूम है ये फेक है, बुक्स में हमें बीइंग इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी may just by analyzing and reading the balance sheet we get to know these entries are the fake one. But being a legal guy, because there my role is not to analyze the balance sheet, there my role is to protect and preserve and get the best value out of it. तो बेस्ट वैल्यू आउट ऑफ इट के लिए जो मुझे बेस्ट एफर्ट्स करने चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर रिकवरी, वो मैं सब करूंगा, और मैं ये मान के चलता हूँ दैट इज माय जेन्युइन एंट्री एंड आई विल मेक ऑल माय एफर्ट्स जस्ट टू रिकवर दैट अमाउंट। सेकंड, अगर मुझे पैसा देना है और वो पैसा आया हुआ है, वहां पर मेरा ट्रांजैक्शन ऑडिट और फोरेंसिक होता है जिसके अंदर वो एंट्री रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे ही वो एंट्री रिफ्लेक्ट करेगी तो वो दैट ड्यू इज नॉट पेबल, अल्टीमेटली दैट विल गो आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। वो उसके लिए फिर लिटिगेशन एनसीएलटी जाएगा। अगर वो हमने रिजेक्ट कर दिया उसका क्लेम और वो एनसीएलटी नहीं गया, तो इट मींस ही हिमसेल्फ हैज अंडरस्टूड दिस एंट्री इज फेक। बिकॉज कोलेशन व्हेन वी, क्योंकि दो सिचुएशन है, अगर मुझे पैसा देना है आई नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन। मैं ये कह रहा हूँ सर कि रिकवरी करनी है, सपोज हमने 1 करोड़ रुपया दिया है, हाँ जी, उन्होंने बना लिया। आपका वो माइक बंद हो गया सर। हाँ जी, हाँ जी। वो प्रॉपर्टी मान लीजिए हमारी 1 करोड़ की, 1 करोड़ का एडवांस दिया और प्रॉपर्टी की एग्रीमेंट कर लिया 10 करोड़ का। हाँ जी। अब वो पार्टी तो बोलेगी कि आप रजिस्ट्री करवा लो, 10 करोड़ हमें दे दो, 9 करोड़ बाकी। तो उस केस में क्या होगा? मतलब क्योंकि वो प्रॉपर्टी की वैल्यू ही नहीं होगी उतनी, तो क्योंकि जो जनरली प्रैक्टिकल जो चीजें देखी है, मतलब कई बैलेंस शीट हमारे सामने भी आई, कई हमने ऑडिट भी नहीं किए मान लो, तो उनमें इस तरह की प्रॉब्लम बड़ी आई है हमारे को। वो बिल्कुल मिलेगी सर। वहां पर जहां आपने
1 करोड़ रुपए दे के और 10 करोड़ का किया हुआ है, तो वो बुक्स ने तो रिफ्लेक्ट कर लिया, बैंक स्टेटमेंट भी तो रिफ्लेक्ट करेगी। नहीं, बैंक स्टेटमेंट हमने 1 करोड़ दे दिया, 3 साल का। लोग क्या करते हैं, 3 साल का एग्रीमेंट बना के रख लिया। जब हम ऑडिट के लिए मान लो डॉक्यूमेंट भी मांगा, कह रहे जी हमारा तो एग्रीमेंट है। हम पूछते हैं भाई कि जब एग्रीमेंट है तो या तो हम ऑडिट रिपोर्ट में इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, या आप बताइए इसको कैसे पेमेंट करोगे। तो वहां पे वो बड़ी मतलब कई बार तो हो सकता है क्लाइंट ही चला जाता हमारे जैसे लोगों से। तो नहीं, वो सिचुएशन आप कह रहे हैं कि व्हेन यू आर वर्किंग एज ए ऑडिटर, बट व्हेन यू आर वर्किंग एज ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, वहां रोल डिफरेंट है। नहीं, वो भी ठीक है कि मैं ये कह रहा हूँ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के हिसाब से जब हम करेंगे तब हमें उसका इवैल्यूएशन करना पड़ेगा शायद कि एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी की डील सर वहां तो मेरा रोल बिल्कुल क्लियर है। मेरा रोल बिल्कुल क्लियर है कि मुझे जो भी पेमेंट रिसीव करनी है उसके लिए मैं सारे एफर्ट करूंगा। जो मेरी एसेट्स है उसको मैं रिकवर करने की कोशिश करूंगा जितनी हो सकती है, और जो मेरी लायबिलिटीज है उसके लिए एक लिस्ट बनेगी, उसकी कट ऑफ डेट फाइनल हो गई, मेरी आईसीडी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, उस पर्टिकुलर डेट से पहले के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने सपोर्ट प्रूव करेंगे और ये बताएंगे कि ये क्लेम मेरा बनता है। वहां मेरा रोल बिल्कुल क्लियर है सर। रिकवरी के ऊपर कोई रोक नहीं है, पेमेंट के ऊपर सारी रोक है। अच्छा, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, ये प्रमोटर और डायरेक्टर को कंपनी के अंदर अलाउ करते हैं आप? बिल्कुल। वो आपके काम को अगर ऑब्जर्व कर रहा है हाँ जी और आपको बाधा लग रहा है तो आप क्या करते हैं? सर, जब आप किसी से सपोर्ट लेना चाहते हैं और आपको मालूम है ये डिस्टर्ब करेगा या मेरी प्रोसेस खत्म करेगा या मेरी कौन सी चीज खराब करेगा, वो मुझे उतनी इंफॉर्मेशन देगा जिससे उसका हार्म ना हो। मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूँ कि वो उतनी इंफॉर्मेशन देगा जिसमें उसका हार्म ना हो। और मेरा रोल बिल्कुल क्लियर है। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आई टोल्ड माई ऑल प्रमोटर्स व्हेन आई जस्ट टेक द कस्टडी एंड कंट्रोल, till the time you are standing with the company and for the benefit of the company, I am with you. The day you will be against the company, I am against you. तब उसको टर्न आउट किया जा सकता है? हाँ जी। नहीं, अगर वो कंपनी के अंदर आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है तो आप उसको कंपनी से बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, कंपनी के अंदर अगर वो डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब कब करेगा? when he is going against the company, going against the process, then he is disturbing me. When नहीं, कोई अपने स्टाफ को भड़का रहा है या अपने स्टाफ को कुछ इस तरह से कह रहा है जिससे कि आपको थोड़ा बाधा हो रही है, तब क्या करेंगे आप? सर उसके दो मैकेनिज्म है। एक के इनिशियल कुछ डेज के अंदर he has that power, he has that influence, he has that capability just to go against me. But अगर उसका एम्प्लॉय उसी के हैं सारे और उन्हीं को वो पेमेंट कर रहा है, कैश में पेमेंट कर रहा है, कैसे भी पेमेंट कर रहा है, अल्टीमेटली दे आर अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर ऑल्सो। तो वहां पर मुझे वो एम्प्लॉयज को फाइंड आउट करने में, because you will also, when you will be dealing practically, you will also get to know okay, who is in favor of the process and who is against the process. Whosoever is against the process, कुछ के 10% अगेंस्ट होते हैं, कुछ प्रोसेस के 90% अगेंस्ट है। जो 90% आपको अगेंस्ट दिखाई देंगे तो वो मान के चलो कि आपने तैयारी कर ली कि उनको मुझे 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर उनको बाय बाय करनी है। और अगर कोई 10% अगेंस्ट है तो मुझे उसको 6 महीने लगा के बाय बाय करनी है। तो वहाँ जो सिचुएशन है, क्योंकि ऑन वेरी फर्स्ट डे इफ आई विल बी आउट ऑफ स्टाफ, आई विल नॉट बी एबल टू कीप द कंपनी एज ए गोइंग कंसर्न। वहाँ मेरा जो कम्युनिकेशन लेवल है, उनका इंटरेक्शन लेवल है, वो सारा जो मुझे है वो बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि वो एक कहावत है सर, जो व्हाट आई पर्सनली ऑल्सो फील, कि नजर के करीब दिल के करीब, नजर से दूर दिल से दूर, फार फ्रॉम साइड फार फ्रॉम हार्ट। तो उस चीज को, क्योंकि जब मैं इंटरेक्शन उनसे बढ़ाता हूँ, उनसे चीजें डिस्कस करना शुरू होता हूँ, उनके सामने, क्योंकि अल्टीमेटली उनके सामने मेरी एक इमेज कैसी बनेगी, दैट आई विल डिसाइड। एंड विद इन 3 months और 4 months यू विल ऑल्सो सी दैट देयर इज ए ग्रेट चेंज। सर ऐसी सिचुएशन आई थी, सीएफओ ने मुझे बोला कि भाई तेरे को मैं देख लूंगा, और उसके बाद 6 months डाउन द लाइन
he was saying sir and was giving each and every information, whatever, which was not even required for the particular process, also required for the process. Why? That kind of rapport building, that kind of confidence, that kind of trust I built up when he was getting salary on time, when each and everything was being performed, was in such a great way that everything he also understood being a professional, कि whatever is being done is for the process. और कुछ प्रमोटर्स, जो आपने कहा ना सर, प्रमोटर्स अगर वो प्रोसेस के अगेंस्ट है तो वहां पर मुझे उनको प्यार से बोलना सर, खुंदक में नहीं बोलना. क्योंकि अब जैसे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ऐसा एक केस में हुआ था जहां वो सामने तो बिल्कुल मीठा रहेगा क्योंकि ही इज ऑल्सो ए बिजनेसमैन, बट पीछे से जो है वो अपनी टीम को या जो इन्फॉर्मेशन मैं उनसे मांगूंगा तो वो पीछे से उनसे पूछेगा कि भाई व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ही इज आस्किंग फॉर. तो वहां पर आने के बाद वो जो सारी चीजें हैं, मैंने उनसे इंफॉर्मेशन ली, कोई भी इंफॉर्मेशन ली तो दैट विल बिकम ए पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. तो ही बीइंग ए पार्ट ऑफ COC, being a director of the company, will also sit in that particular meeting. Information memorandum will also be available with him. So whatever the information which I will be taking it up, what I am doing with that information, that employee is not aware of. क्योंकि इंफॉर्मेशन मैं उनसे ले रहा हूं, उस इंफॉर्मेशन का मैं क्या करूंगा, he doesn't know, my promoter also doesn't know, but whatever will be done, that will be known to him, say 2 months, 3 months down the line, and when the COC will be there. And if he is going against the corporate means, कोई भी इंफॉर्मेशन लेंगे तो उन लोग से सिग्नेचर करा के लेना है. नहीं सर, कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम ले रहे हैं तो थ्रू मेल लें. अच्छा, बेटर है, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड हर एक चीज पे सिग्नेचर जो है दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. हार्ड डॉक्यूमेंट्स हम प्रेफर ही नहीं करते. हम ये कहते हैं कि आपको जो देना है, मैं उनको मेल लिखता हूँ टू प्रोवाइड ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, और उनसे बोलता हूँ कि नो, डोंट गिव मी हार्ड कॉपी, गिव मी द सॉफ्ट कॉपी थ्रू योर मेल. सो अल्टीमेटली दैट बिकम्स ए रिकॉर्ड. और कोई भी कम्युनिकेशन भी उनसे करना है दैट इज थ्रू मेल, इवन विद द प्रमोटर्स ऑल्सो. अच्छा, कुछ वीडियोग्राफी भी करनी पड़ती है क्या? वीडियोग्राफी करते हैं फॉर आवर ओन सिक्योरिटी एंड फॉर आवर ओन इंफॉर्मेशन के. कई बार स्टॉक जो है जो इस तरह का होता है जहां जो जितनी भी एसेट्स हैं, बाद में प्रमोटर बोले कि यहाँ 2 मशीनें खड़ी थी जो इसमें से एक गायब कर दी, तो वो अपनी सेफ्टी के लिए हम वीडियोग्राफी कर लेते हैं. And I also recommend that should be done. फर्स्ट डे घुसते साथ आप वीडियोग्राफी करके रख लेते हैं. जैसे ही हम सर जब हम उनसे कस्टडी एंड कंट्रोल पे साइन कराएंगे, एसेट्स जब वो हमें हैंडओवर कर रहा होगा, तो उस टाइम जितनी एसेट्स उसने हमें दिखाई है वो सारी एसेट्स का हमें वीडियोग्राफी होना चाहिए. क्योंकि वही जो एसेट आपने देखी है, ली है, उसी पे तो हम बोलेंगे कि यस आई हैव सीन इट, दिस इज इनटू माय कस्टडी नाउ. So please continue, sir. We have got another 10 minutes. So let us wrap it up. हाँ जी. का मतलब यह है कि बिजनेस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए IRP या RP को. यस सर, तभी कंपनी बच पाएगी. बिजनेस अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा सर मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग वाला थीम है. तो वहां पर जब हम मैनेज करते हैं चीजें सर, क्योंकि अल्टीमेटली द रोल ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज मोर ऑफ ए मैनेजमेंट प्रोफेशनल. अगर लीगल जितने भी काम है सर, पब्लिक अनाउंसमेंट करना है या हमें COC कॉन्स्टिट्यूट करना है, नोटिस भेजने हैं, या और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जहां हम उस कंप्लायंस के पीछे होने शुरू हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उन चीजों में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम प्रोसेस भूल जाते हैं. डे इन डे आउट में अगर मान लो कहीं पर स्ट्राइक हो गई, एकदम वर्कर्स ने हड़ताल कर दी, तो मुझे ये याद नहीं रहता कि 75th डे है. तो इसीलिए वहां मैं अपने रिमाइंडर्स जो है, डेट ऑफ जो लास्ट डेट है उसके 3 दिन पहले के अपने रिमाइंडर सेट करके रखता हूँ कंप्लायंस के, कि भाई ये डेट आने वाली है. क्योंकि जब हम प्रोसेस के अंदर घुसते हैं वहां हमारा सारा का सारा ध्यान ये होता है कि आज इस साइट के ऊपर ये प्रॉब्लम है, उस साइट के ऊपर ये प्रॉब्लम है.
वो सारी सिचुएशंस को जब आप हैंडल कर रहे होते हैं तो वहां आपको 2 दिन लगेंगे या 3 दिन लगेंगे। कई बार कॉन्ट्रैक्ट का एक्सटेंशन है, कई बार आप कॉन्ट्रैक्ट को डेविएट कर रहे होते हैं, कई बार वो बीजी इन्वोकेशन स्टॉप कर रहे हैं, कहीं वर्कर्स स्ट्राइक कर लेते हैं, कहीं माहौल पानी भर गया सारा। तो वो जो सारी सिचुएशन है, क्योंकि अब जैसे मानसून सीजन है तो कई साइट्स के ऊपर पानी भर गया, जहाँ वो स्टॉक है वो खराब उनको शिफ्ट कराना है, तो रेंटल अरेंज करना है, वहाँ प्रीमाइसिस चेंज करनी है। तो ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है विच इज नोवेयर इन आईबीसी। So that need to be dealt with by you personally, and without your permission that cannot be dealt with. So that kind of business acumen that need to be developed when we are dealing with that situation where the commercial cost, अब मैं रेंट पे लेता हूँ तो अब मैं सीओसी से परमिशन लेने जाऊं तो वैसे दिक्कत, और अगर नहीं ली तो वो बाद में अगर उन्होंने रेटिफाई नहीं किया तो और ज्यादा प्रॉब्लम। लॉ क्या यही यूज है कि भाई यहाँ हम फंस सकते हैं या यहाँ से बच सकते हैं? Sir, first month when you are doing it, you might not be aware of the bent of mind of COC, because what kind of people will come into, ultimately they are also human beings when they attend the meeting. So when they come up, they also understand that whatever the actions that have been performed by a resolution professional are in favor of the resolution, favor of the corporate debtor or against it. वहां ये सवाल जरूर पूछते हैं कि इससे सस्ता नहीं मिल सकता था, इससे सस्ता भी तो मिल सकता था, आपने इसको, तो तब हम ये कहते हैं कि सर एट दैट पॉइंट ऑफ सिचुएशन, यस दिस इज फॉर द फर्स्ट मंथ, वी आर नॉट आल्सो टोल्ड हिम दिस इज गोइंग टू बी फॉर 6 months. So situation was like that where the rent was offered at that point of time and this was the available pricing. अब आपको लगता है कि yes we are also hunting on the same line, we also don't want to spend more, so तब 2-3 कोटेशंस, वो इमरजेंसी सिचुएशन दे ऑल्सो रियलाइज, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मैं 5,000 पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाला डिसीजन लेता हूं तो दैट में ऑल्सो रिजल्ट अगेंस्ट ऑल अदर सीओसी मेंबर्स, क्योंकि वो सारे अल्टीमेटली सीओसी मेंबर्स ही सपोर्ट करते हैं आपको कि व्हेन यू आर डूइंग राइट। 15 बैंक्स, 15 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हेन दे आर सिटिंग टुगेदर एंड वी आर टेकिंग अप्रूवल और रेटिफिकेशन, इट इज नॉट इजी टास्क। एंड I would like to say, sir, till the time whatever resolutions I have proposed to members of COC, क्योंकि जहां मेरा कन्विक्शन होता है सबसे पहले तो मैं अपने आप को कहता हूँ yes if I would have been the creditor तो ये रेजोल्यूशन मैंने पास किया होता, तो I put myself into that shoes and before presenting to COC I convince myself yes this is good for them. So when I'll be thinking this is good for them, automatically I will be getting yes from their side. If I'm thinking from personal perspective कि भाई कंपनी के अंदर कुछ नहीं है और 8 लाख रुपए महीने का मैंने रेम्यूनरेशन प्रपोज कर दिया, तो मुझे 8 लाख पर मंथ का रेम्यूनरेशन जस्टिफाई करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वहां सिचुएशन ये आती है कि जो रीजनेबल वाला जो वर्ड है, आई हैव टू बी रीजनेबल एंड दैट डिपेंड्स केस टू केस. सो दिस इज माय वे ऑफ वर्किंग व्हिच I personally deal with when I'm dealing with the cases. Commendable, sir. Commendable. बिल्कुल totally new dimension. बिल्कुल totally new dimension दी है आपने. Well, it is beyond what is written in code. Totally, exactly working is totally different. और यही real होनी चाहिए. Wonderful. Hats off to you, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much, Harish Taneja ji. It was a really insightful session. And we hope that it will help all those who are budding insolvency professionals in better comprehension of the code and their jobs and responsibilities. So for the information of the participants, I would like to tell them that CS Harish Taneja sir is also in the group. So you can interact him in the group also. You can post your queries and he is kind enough to answer as and when he finds it convenient. Thank you very much, sir. So Thank with you, your sir. permission, we would like to end this session now. Thank you Sure, very much. sir. Thank you very much. And looking for more such insightful sessions. Sure, sir. Thank you. Thank you, sir.